वियतनाम जाने वाले बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वियतनाम का वीज़ा ऑन अराइवल क्या चीज़ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एयरपोर्ट पे ये मिल जाता है आसानी से, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये रिस्की है, और कुछ लोग गलत डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे चले जाते हैं और बदले में होता क्या है, एयरपोर्ट पे आपको एंट्री डिनाई की जाती है। तो सच ये है कि वियतनाम का वीज़ा ऑन अराइवल एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ तब जब आपको ये पता हो कि कैसे काम करता है, कब इसे यूज़ करना और कब इसको यूज़ नहीं करना है। आज की इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली यही चीज़ क्लियर करने लगा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ गेस्ट एक्चुअली ऑन दिस वीडियो, कि अप्रूवल लेटर क्या होता है, एयरपोर्ट पे क्या होता है, आपके लिए फीस कितनी होती है और कौन सी गलतियों से आपको बचना है। चलते हैं सीधा एक्सपर्ट के पास। So Gracie, welcome to my channel Travelman today, and I have some questions regarding Vietnam visa on arrival. And to begin with, what exactly is the Vietnam visa on arrival? How does it work for Indian passport holders? Yeah. So first of all, hello, Asim. And for visa on arrival, as the name is said, it means that the Indian travelers can get the visa upon arrival at Vietnam airport when they reach there. मैं एक्चुअली ग्रेसी से सारे सवाल कर रहा हूँ और हिंदी में आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ। तो आपको एयरपोर्ट पे वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है, लेकिन कैसे, आगे बात करते हैं ग्रेसी से। व्हाट इज वियतनाम वीजा अप्रूवल लेटर, देन हु इशूज इट, एंड व्हाई इज अ ट्रैवल एजेंसी रिक्वायर्ड इन दिस केस? So the visa approval letter is a pre-document that the travelers must get beforehand, so that they can board in for the flight and then come to Vietnam. Means that this letter, this like a pre-visa, so that the traveler have to get it beforehand and it's granted by the Vietnam immigration. प्री अप्रूवल लेटर है काइंड ऑफ आपको, ताकि आप फ्लाई कर सकें, फ्लाइट को बोर्ड कर सकें वियतनाम के लिए, और ये आपको जो है यूजुअली इशू किया जाता है बाय वियतनाम इमिग्रेशन अथॉरिटीज़। तो इसमें जो है ट्रैवल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, जिनके थ्रू आप अपना ये जो पूरा प्रोसीजर फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो ग्रेसी, व्हाट रोल ट्रैवल एजेंसी इज प्लेइंग इन दिस केस? The responsible of the travel agency here is the one who's sponsor for the travelers to come to Vietnam. Means that they will be the sponsor for the travelers, and then under that sponsorship, the immigration will grant it the visa letter for the travelers. ओके, सो जो ट्रैवल एजेंसी है इस केस के अंदर जो है आपको स्पॉन्सरशिप करती है, आपको स्पॉन्सर करती है ट्रिप, ताकि आप अप्लाई कर सकें। ओके, ग्रेट। एंड व्हाट आर द की डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स एन इंडियन ट्रैवलर मस्ट सबमिट टू गेट दिस अप्रूवल लेटर? आप बता सकते हैं इसके बारे में? For Indian passport holders, the most important thing is the passport copy, the front page, passport including the data of the travelers, and the expected entry and exit date. The last one is the expected airport that they arrive. Okay. Means which is Hanoi, Ho Chi Minh, or Da Nang City, like that. सो इसके लिए अब आपको कुछ 3-4 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। पहला है पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी 6 मंथ्स की होनी चाहिए, जैसे बताया ग्रेसी ने, और साथ ही साथ एंट्री एग्जिट डेट्स आपकी होनी चाहिए, और आपकी जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है और कौन सा आपका एग्जिट चेक पॉइंट है वो आपके पास होना चाहिए। They only need to supply all the required documents that I mentioned just now, so that to apply for the visa approval letter. But before travel, there is another form that they have to fulfill, is the visa application form. Okay, so do we fill this form before we travel, or when we reach at the immigration? When do we fill this form and we submit like passport validity, entry exit dates, and entry exit points? Yeah, they need the travelers must fill in the form, the visa application form, before they travel to Vietnam. Okay. And upon arrival, they have to submit it at the landing visa. Yeah. ओके, सो आपको जो है ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एडवांस में भरना पड़ेगा। आई होप कि ग्रेसी मुझे वो सारे लिंक शेयर करके दे देंगे जो आपको भरना होगा। चलने से पहले आपको उस फॉर्म को भरना है और आपको इमिग्रेशन पे उस फॉर्म को दिखाना है, जिसमें आप सारी अपनी डिटेल स्पेसिफाई करेंगे। ओके, व्हाट आर द वैलिडिटी लिमिट्स ऑफ द वीजा ऑन अराइवल, एंड इज इट ओनली फॉर एयर ट्रैवल, आल्सो लैंड एंड सी एंट्री? For visa on arrival or visa approval letter, to be specific, the letter only valid for 30 days maximum, and with either single or multiple entries. Okay, I see. So that's what I wanted to clarify. So we can use this for both a single entry and multi-entry for 30 days of stay period, right? The validity. Yeah, correct.
राइट। तो ये कह रही हैं ग्रेसी कि आप मल्टी एंट्री पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं और 30 डेज का आपको स्टे पीरियड टोटल यहाँ पे मिलता है, वैलिड होता है ये 30 डेज के लिए। ओके, एंड व्हाट अबाउट लैंड एंड सी एंट्री? कैन वी आल्सो एंटर वियतनाम यूजिंग वीजा ऑन अराइवल बाय लैंड स्पेशली? The visa approval letter can only used to travel by air. ओके, तो हमें It's बाय stated, ओके yeah, it's stated very clearly on the visa approval letter ओके। format that is only used for air. सो ग्रेसी कह रही हैं कि आप बाई एयर एंट्री के लिए ही वीजा अराइवल के लिए एलिजिबल हैं और ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेसी इज, वंस ट्रैवलर्स लैंड इन वियतनाम, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस एट द एयरपोर्ट टू गेट द वीजा स्टैम्प्ड? Yeah. So upon arrival, right? After they get the visa approval letter, they travel to Vietnam. Upon arrival at Vietnam airport, they go straight to the landing visa counter. The landing visa counter submit for the visa approval letter, Okay. their original passport, the visa application form that they filled before, and the stamp fee. Okay, The so stamp fee. The stamp fee here is 25 USD for single entry or 50 USD for multiple ones. मल्टीपल वंस भी है, $50 वीजा एंट्री। तो ग्रेसी ने को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको जब आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेंगे, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और जो प्री अप्रूवल लेटर है जो ये आपको प्रोवाइड करेंगे वो कैरी करके आपके पास आपकी पासपोर्ट, आपकी रिटर्न टिकट्स लेके आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन काउंटर्स पे जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा, इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि आप पहले लैंडिंग जो एरिया है इमिग्रेशन काउंटर्स पे जाएंगे, वहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे और आपको ऑन अराइवल की एक फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप सिंगल एंट्री वीजा लेते हैं उसकी 25 USD और अगर आप मल्टी एंट्री वीजा लेना चाहते हैं उसकी 50 USD कॉस्ट है। ओके, सो व्हाट मोड ऑफ पेमेंट वी डू देयर एट द एयरपोर्ट? डू वी पे इन USD डॉलर्स लाइक इन कैश और कैन वी पे थ्रू Forex कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स? Upon arrival for the stamp fee, you must pay by cash in USD or VND. No, they don't accept payment by card or transfer. कि जो आपकी पेमेंट होगी वो आपको कैश में ही करनी पड़ेगी, कार्ड्स वगैरह यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होंगे। ऑलराइट, एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स ग्रेसी पीपल और इंडियन ट्रैवलर्स मेक व्हेन दे ऑप्ट फॉर वियतनाम वीजा ऑन अराइवल? हैव यू विटनेस दैट? Yeah, actually a lot. Because normally people think that visa on arrival means that they just travel to Vietnam and get the visa on arrival. Wow, okay. But the fact is they need to get the visa approval letter in advance, and it takes time to get the letter. Normally it takes about 3 to 7 working days. Oh, okay. Just like the e-visa. अब ग्रेसी हमें एक्सप्लेन कर रही हैं कि क्या कॉमनली इंडियन ट्रैवलर्स गलतियां करते हैं कि वो वीजा ऑन अराइवल सुन के डायरेक्टली फ्लाइट बुक किए वियतनाम में पहुंच जाते हैं, उनके पास प्री अप्रूवल लेटर नहीं होता जिसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आपको प्री अप्रूवल लेटर अप्लाई करना है, आप ग्रेसी की जो ट्रैवल एजेंसी उनके थ्रू कर सकते हैं जो कि प्योरली जेन्युइन है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हाईली। ओके, सो अनदर थिंग इज लाइक व्हाट आर योर टॉप टिप्स, 2 and 3 टिप्स यू वुड लाइक टू शेयर फॉर फर्स्ट टाइम वियतनाम ट्रैवलर्स टू अवॉइड इश्यूज एट द इमिग्रेशन व्हेन दे ऑप्ट फॉर वीजा ऑन अराइवल? So for the first time Vietnam travelers, they need to acknowledge that they need to get the visa in advance so that they can travel to Vietnam. Like the airlines will require for the visa in order to check in at the departure airport, right? So they must get it in advance, either e-visa or visa approval letter. Okay, now one more question which is I think quite interesting to know, like as we know that Indian travelers can apply for a Vietnam e-visa, but I would like to understand if we can use this visa on arrival service at first place. Is it possible to use it at the first place or do you still recommend applying for an e-visa? So as I said, actually it takes time to get the visa approval letter for visa on arrival option, right? So normally we usually suggest the travelers to opt for e-visa option instead, because for e-visa they don't need to pay for any other fee upon arrival. But for the visa on arrival, they need to get both the visa approval letter and then pay for the stamp fee upon arrival. So means two steps, right? Okay. And but if the travelers want to collect the visa stamp, like the visa stickers for their collections, they can go with visa on arrival option.
Okay, and if they want like sticker visas, especially like they want sticker Yeah. on the passport. Okay. तो Yes. ग्रेसी ये एक्सप्लेन कर रही है हमें कि क्या हमें ई वीज़ा पहले लेना चाहिए या वीज़ा ऑन अराइवल, तो आपको ई वीज़ा ही यूजुअली अप्लाई करना होता है जिसमें कोई एडिशनल चार्जेस आपको नहीं लगते और 4 से 5 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा आ जाता है। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल आप तब ले सकते हैं अगर आपको खासकर कुछ भी अपनी एप्लीकेशन को लेके ई वीज़ा को अप्लाई करते वक्त लेके कोई इश्यूज आ गए हैं और आप का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इस सर्विस को। या जिन लोगों को खासकर स्टैंप्स वगैरह जो पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ाज जो चाहिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एडिशनली थोड़ा पे करते हैं और अप्रूवल लेटर आने में भी 5 से 7 वर्किंग डेज यहाँ पे लगते हैं। तो आप 2 बार फीस पे करते हैं, पहले आप अप्रूवल लेटर के लिए करते हैं, फिर आप $25 या $50 जो है एयरपोर्ट पे जाके करते हैं। तो ये डिफरेंस है, बट ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं अगर आपको ई वीज़ाज को अप्लाई करने में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट वन मोर लास्ट क्वेश्चन, लाइक व्हाट अबाउट पीपल हु आर फेसिंग इश्यूज विद देयर ई वीज़ा एप्लीकेशंस, सो व्हाट डू यू रिकमेंड, लाइक व्हाट सर्विस यू प्रोवाइड इन दैट केस? Can you specific about like the issues that they are facing with the e-visa, like pending e-visa orders, Yeah. not getting e-visa on times, or In some cases, I've seen that people have issues with the first name, last names, and things like that, or they have middle initials, and the visa is rejected, and it takes time to come up. So, in that case, can you also support that? Actually, we have a lot of clients who have single name on their passport. Okay. But e-visa is widely used now, and it's sold very easy. You can just like apply for a normal passport name. Okay. Normal Because they have specific like instruction on the website, and e-visa order takes 3 to 7 working days to process. So the travelers must apply for it at least like 2 weeks in advance. Okay. To avoid the weekends or holidays. Okay. And of course, it's applied for the visa on arrival option as well, because the visa letter also takes 3 to 7 working days to process. ग्रेसी ने ये कहा है हमें कि आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो कि 5 से 7 वर्किंग डेज में आता है, और कम से कम 2 हफ्ते पहले आप ई वीज़ा को अप्लाई करें। लेकिन अप्रूवल लेटर की जहाँ पे बात आती है वीज़ा ऑन अराइवल के केस में, तो 5 से 7 दिन आपके सिर्फ अप्रूवल लेटर को आने में लगते हैं, फिर आप इमिग्रेशन फॉर्म जो भी वीज़ा इमिग्रेशन फॉर्म है वो भरते हैं और आप एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ग्रेसी फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आई वुड सर्टनली रिकमेंड योर सर्विस for both e-visa issues as well as people who are willing to take visa on arrival, and the link is given actually in the description of this video. तो अगर आप लोगों को वीजा ऑन अराइवल चाहिए तो वो भी ऑप्शन खुला है, और जेन्युइन रूट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म को भरें, और आपको जिस भी कैटेगरी का वीज़ा चाहिए ज़रूरत पड़ती है ई वीज़ा को आप पहले अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेटर है, और अगर आपको वीजा ऑन अराइवल चाहिए तो उसका भी ऑप्शन मैं डाल दूंगा लिंक के डिस्क्रिप्शन में। सो ग्रेसी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आई होप there's nothing else left that I want to ask, and would you like to add anything additionally, or are we good for now? Yes. So actually, recently we have a few clients who has their children who travel with them, and in the e-visa application, there is one article say that if the children is under 14 years old, Okay. and if they don't have the passport or share a passport with the parents, yeah, then many clients thought that many people thought that only just like if the children is under 14 years old, they just need to list on their application there. But actually, the point is, if the children have a separated passport, they need to apply for a separated e-visa application, not just listing in the parents' application. Right, absolutely. Thanks for the clarification. तो ग्रेसी यहाँ पे ये कहना चाहती हैं बिफोर वी एंड दिस वीडियो कॉल, तो ये कह रही हैं कि अगर आपके बच्चे का पासपोर्ट है या 14 साल से नीचे का है या बड़ा है, तो उसको सेपरेटली ई वीज़ा एप्लीकेशन को फिल आउट करना पड़ेगा, वीज़ा एप्लीकेशन की सेपरेटली लगेगी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो बच्चे 14 साल से नीचे के हैं और वो क्या करते हैं, उनके पास अगर पासपोर्ट नहीं है, दे डोंट शेयर देयर नेम्स ऑन द पेरेंट्स पासपोर्ट, उस केस के अंदर जो होता है वो सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में बच्चों के नाम स्पेसिफाई कर देते हैं, और उससे चैलेंजेस उनको आते हैं एयरपोर्ट पे। Yeah, you're welcome, and thank you so much for inviting me to join your video. Alright guys, thank you so much for watching this video. I hope कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, इस अपडेट को हाइप करें वीडियो को, और जो लिंक्स हैं नेसेसरी
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे अगर आपको VOA अप्लाई करना है या आपको ई वीज़ा को लेकर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ।